वडोदरा के मरी माता खांचे में मोबाइल मार्केट मौजूद है जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है। वहां के निवासी इतवार को इस बाजार को बंद रखवाने की मांग साझा कर रहे हैं। दरअसल इस मोबाइल मार्केट के दिन भर चालू रहने के चलते वहां पर वाहन व्यवहार ठप हो जाता है, तो वहीं वहां के लोगों का पैदल चलना भी जैसे मुश्किल हो जाता है। उसी के मद्देनजर इस समस्या को बार बार निवासियों की ओर से साझा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या ज्यों की त्यों है, जिसके मद्देनजर आज परेशान हुए निवासी इकट्ठा होकर पालिका की बड़ी कचहरी डिप्टी मेयर चिराग बारोट को आवेदन पत्र देने पहुंचे थे। दरअसल डिप्टी मेयर चिराग बारोट की ओर से निवासियों को आश्वस्त भी करवाया गया था कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और फैसला लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नागरिकों के रोष का सामना डिप्टी मेयर चिराग बारोट को करना पड़ा था। रजूआत लईने एवी रीते आया छे कि अमारा मरी माताना खाचामां જે બધી દુકાનો છે અમારી એવું માંગ છે કે સન્ડે બંધ રાખવાનું એવું બરાબર છે, પણ એ લોકો બંધ રાખતા નથી। અમને પાર્કિંગનો ને એનો તો બહુ પ્રોબ્લેમ છે। અમે આજે વર્ષોથી આ વસ્તુ લઈને કરીએ છીએ પણ કશું મેળ ખાતો નહીં બરાબર છે। હવે એના માટે અમે એક વિચારીએ છીએ કે બધા જ ત્યાં જઈને બેસીએ દુકાનની બહાર ખાધા પીધા વગરના બરાબર છે, એવું વિચાર કરીએ છીએ અમે। હવે એમાં અમે અહીંયા ઓફિસમાં આવ્યા છીએ આપવા અરજી। હવે જોઈએ છે શું કરે છે ભાઈએ। નહીં અરે ઘણી આપેલી છે, વર્ષોથી ચાલે છે આ કામ અમારું, પણ કઈ એનો નિકાલો આવતો નહીં। રવિવાર ખાલી બંધ રાખવાનું માંગ છે અમારી બસ। અને પાર્કિંગ તો રોજનું આડેધડ થાય છે। અમે પણ એ કરીએ છીએ કે ભાઈ એ લોકો કમાવે, ખાલી રવિવાર છોડીને રોજે કમાઈએ છે ને અમે પણ ધંધાવાળા છે, એ પણ ધંધાવાળા છે, ના નથી, પણ રવિવાર ખાલી અમને જોઈએ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।